lectures we will discuss gastrointestinal pharmacology. Gastrointestinal pharmacology. Pharmacology. In GIT pharmacology, we will discuss drugs drugs to treat ulcer. Okay, first we will discuss the drugs those are going to treat the ulcer. What is ulcer? What is pathophysiology of the ulcer? And what are the drugs those are going to treat the ulcer? We will discuss. Okay, next we will discuss drugs to treat diarrhea. What is diarrhea? What is pathophysiology of diarrhea? What are the types of the diarrhea? And what are the drugs to treat diarrhea? Okay. Next, we will discuss uh, drugs. What is constipation? Constipation. And next, after constipation, we will discuss to treat emesis. Vomiting. Emesis mean vomiting. Okay. This is for डिजीजेस इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी, ठीक है। जिसमें हम अल्सर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डायरिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस करेंगे और जिसमें हम वॉमिटिंग को डिस्कस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसको उल्टी भी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, ठीक है। अल्सर हमने सुना होगा, बाज मरीज कहते हैं कि जो है ना मुझे जलन हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? जलन हो रही थी। ये अल्सर में बेसिकली जलन होती है। डायरिया आपको पता है वाटरी सिक्रीशंस, ठीक है, जो हमारे स्टूल से पास होती हैं, बार बार हमें अर्ज होती है फॉर डेफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अल्सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिफोर वी गो इनटू द pathophysiology of the ulcer, we should know the physiology of HCL production, as we have already studied in our first year physiology in GIT. ठीक है। तो before we go into the pathophysiology of the ulcer, means what are the factors those are going to initiate the ulcer, ठीक है। वो होती है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। फिर हम उसके बाद ड्रग्स की तरफ आएंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आप लोगों को बताया था, पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है फिजियोलॉजी चल रही है, उसको कुछ ऐसे फैक्टर्स ने आके डी ट्रैक कर दिया, ठीक है। एज वी नो दैट व्हेन फिजियोलॉजी गेट्स रॉन्ग और गोज रॉन्ग इज पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो रॉन्ग कैसे होती है? जब हम जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर आर गोइंग टू इंटरप्ट द नॉर्मल रनिंग फिजियोलॉजी, ठीक है। तो क्या बन जाती है? पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि वो नॉर्मल सिस्टम चल रहा था, अब उसके अंदर देर इज समथिंग रॉन्ग, जो उसके अंदर कोई बिगाड़ पैदा हो गया, ठीक है। तो दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। जब तक हम फिजियोलॉजी को नहीं जानेंगे तब तक हमें पैथोफिजियोलॉजी का पता नहीं लगेगा, और जब जब तक हम पैथोफिजियोलॉजी को नहीं जानेंगे हमें ड्रग्स का आइडिया नहीं होगा, ठीक है। देन फर्स्ट वी विल सी द फिजियोलॉजी ऑफ द फैक्टर्स फॉर अल्सर, ठीक है। फिर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्सर को जाके, सॉरी, जो अल्सर को कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम ड्रग्स की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। एंड ओके,
Before starting the anti-ulcer drugs, we will first discuss the physiology of HCL production. क्या? Physiology of, as you people already know, this is stomach. Okay, right? This is stomach, and there are different parts of stomach: antrum, fundus, body, pylorus. Okay, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इसके, ठीक है। ये ये एक पोर्शन है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये वाला और पोर्शन है। फिर उसके अलावा देन देयर इज एन अदर पोर्शन, ठीक है। तो द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द stomach. This is stomach. Okay, and we are going to discuss the parietal cell of stomach. Okay, next, now I am going to draw the parietal cell of stomach. Everyone has to uh, switch off their mics. Okay, this is the parietal cell of the stomach. Okay, okay. Basolateral side. As you people already know, the basolateral side is facing blood. Basolateral side is facing blood or basolateral membrane. And here is the luminal membrane. Luminal membrane or side. Okay. And this is the diagram of parietal cells. Parietal cells. And these parietal cells are basically responsible for the production of HCL, as you people already know it. In the basolateral side, uh, here is the blood supply. Here is the blood supply for the blood vessel that is going to supply the blood to stomach. Okay. Then there is the nerve supply. Then there is the nerve supply, neurons, and there are some other cells here. There are some other cells here. Okay, and as you people already know, आप लोगों को पता है कि parietal cells के ऊपर different types के क्या हैं, receptors हैं. Is one type of receptor, and these are which type of receptor? आप लोगों को पता है कौन से receptor है, इनको क्या कहते हैं? As I have already told you people many times. क्या नाम है receptors का? क्या नाम है? G protein coupled receptors. Okay. Pump. Here is the pump. That is basically hydrogen potassium ATPase pump है, ठीक है. That is responsible for outward movement of hydrogen ions. Is responsible for आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कि ये सेल है, इसके अंदर से हाइड्रोजन आयंस को बाहर भेजता है एंड
is associated with influx of potassium ions. Potassium ions move inside, and after that, these potassium ions through potassium channels again go back to the uh, extracellular fluid. ओके, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? HCl की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब तो जो ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर से इसके अंदर होता है गैस्ट्रिन। मतलब कि ये कहाँ से आ रहा है, मैं अभी बताता हूँ। गैस्ट्रिन, ये क्या है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है वो जी सेल्स ऑफ एंड्रम से रिलीज होता है, ठीक है। और फिर किधर जाता है? ब्लड में। ब्लड में फिर जाता है, और फिर ब्लड से वो किधर पहुंचता है? पैराइटल सेल्स के ऊपर मौजूद अपने रिसेप्टर के साथ के ऊपर जाके लगता है, और ये इसका रिसेप्टर है। किसका? गैस्ट्रिन का। ओके, अब ये जो गैस्ट्रिन का रिसेप्टर है, दैट इज G protein coupled receptor, and the G protein that is associated with this gastrin is GQ system, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो GQ प्रोटीन होती है, ठीक है, GQ वो जाती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। वो फॉस्फोलाइपेज PLC, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करती है। फॉस्फोलाइपेज सी फिर आगे जाके क्या करता है? P2 की ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। जिससे हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एक IP3 बनता है, और दूसरा हमारे पास डैग बनता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। दैट इज डाई एसाइल ग्लिसरॉल। फिर ये IP3 की तरह जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद लाइगेंड गेटेड आयन चैनल को ओपन करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आउट फ्लक्स होता है, और यहाँ पे कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा। इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। सही है, दिस इज द वन पाथवे, दिस इज द वन पाथवे। अच्छा, एंड द नेम ऑफ दिस रिसेप्टर इज, एवरीवन CCKB receptor, CCKB receptor. Just like this, there is another receptor, and the name for the receptor is M3 receptor. That is M3 receptor. M3 receptor. And the ligand for M3 receptor is acetylcholine, which is coming from the vagus nerve, postganglionic fiber of uh, vagus nerve. Post, as you people know that there are two type of the fibers: preganglionic nerve fibers and postganglionic nerve fibers. So this is the portion which is innervating the organ is postganglionic nerve terminal. So this is the postganglionic nerve terminal of the vagus nerve. As you people already know, vagus is one of the major nerve कंट्रोलिंग मेजर पोर्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल, ठीक है। ये पैरासिम्पथेटिक का मेजर पोर्शन को ये कवर करती है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ से क्या रिलीज होगी? विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम हियर? कौन बताएगा? विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज गोइंग टू बी रिलीज्ड? विच न्यूरो ट्रांसमीटर? as you people know that parasympathetic nervous system is the system of the rest and digest. So in rest and digest, parasympathetic is over or dominating. And you people know that which neurotransmitter is linked with parasympathetic uh, nervous system? Absolutely, acetylcholine is there, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन आ गई, वो एसिटाइलकोलिन अपने कौन से रिसेप्टर को ऑन करेगी? ये muscarinic M3 receptor. And you people know that M3 receptor are also associated with the GQ pathway, with GQ pathway. So definitely when
Acetylcholine is going to be released. It will activate its M3 receptor, and this M3 receptor is again coupled with GQ, and there is ultimately increase the level of calcium in the parietal cells of stomach. Okay, right. ओके, मैं ये ना इसको रिपीट करूंगा, डोंट वरी, अभी ये लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ. ओके, नेक्स्ट कम टुवर्ड्स एन अदर रिसेप्टर. नेम फॉर रिसेप्टर इज H2 receptor. What? H2. And H2 means histamine. H2 means histamine receptor. Okay. And from where histamine is going to be released? Histamine is going to be released from this type of the cell that I have just mentioned here. And the name of cell is ECL cells. ECL cells. What is meant by ECL cells? Enterochromaffin like cells. ECL cells mean enterochromaffin like cells. Enterochromaffin like cells are the cells which are present nearby to the parietal cells. And parietal cells are the part of the oxantic glands. ठीक है, oxantic glands are responsible for HCl production. Oxantic glands. These are the enterochromaffin like cells. Those are present nearby parietal cells. अब क्या होता है कि ये जो इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल जो रहते हैं ना, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम हियर, and these receptors are going to activate these H2 receptors. And listen and remember, these H2 receptors are uh, uh, linked with GS pathway, are linked with GS pathway. As you people know that here is the enzyme that is adenylyl cyclase. That is adenylyl cyclase. So here is the GS system. GS system is going to activate here the adenylyl cyclase. This adenylyl cyclase is going to further do the activation of some second messenger, and it increases the level of uh, cyclic AMP. Cyclic AMP by ATP. By ATP. I'm not going to elaborate all what is happening with GS and GQ, etc. Okay, so then this cyclic AMP is going to activate an enzyme that is called as cyclic AMP dependent protein kinase, PKA. cyclic AMP dependent protein kinase A का लेवल ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ये तीन रिसेप्टर्स हैं जो कि अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे. ओके, here is the vesicle. Here is a vesicle. Here is the vesicle that is uh, basically have these potassium hydrogen ATPase pump. So it had potassium uh, or hydrogen ATPase pump, just like this. Basically ये pumps हैं. ये क्या है? Pumps हैं. ठीक है, अब क्या होगा? लिसन एंड रिमेंबर, इज देयर गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन, और हिस्टामिन हिस्टामिन अपने H2 रिसेप्टर को ऑन करेगी. मस्करीन एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने मस्करीनिक M3 रिसेप्टर को ऑन करेगी. गैस्ट्रिन जो है वो अपने CCK-B रिसेप्टर को ऑन करेंगी. तो अल्टीमेटली क्या होगा? कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा. अल्टीमेटली क्या होगा? कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा. ये देखो, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए का लेवल ज़्यादा हो रहा है. सही है. एंड लिसन, एक और चीज़ भी है यहाँ पे, एक और चीज़ भी है, दैट इज प्रोटीन काइनेज सी. प्रोटीन काइनेज सी.
और पीकेसी, और पीकेसी। पीकेसी क्या करता है, और कैल्शियम क्या करता है, और प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, इन तीनों के एक ही काम है क्या, दिस पीकेसी, दिस कैल्शियम, और दिस प्रोटीन काइनेज सी। ये इस जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल है, वेसिकल, दिस वेसिकल, द वेसिकल कंटेनिंग दिस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पम्प वेसिकल, ठीक है, इनको क्या कर देता है, इसके फॉस्फोराइलेशन करता है। याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे क्या, एडीएच, तो मैंने आप लोगों को बताया था वेसिकल्स होते हैं दैट कंटेन पोरिन चैनल्स, व्हेन देयर इज phosphorylation of these vesicles, those पोरिन channels gets inserted into the apical membrane of collecting tubules or principal cells in case of kidney, तो just like that इधर भी क्या होगा, प्रोटीन काइनेज सी, calcium and protein kinase A, these are going to phosphorylate this vesicle, phosphorylate this vesicle. When this vesicle gets phosphorylated, it start inserting its hydrogen potassium ATPase into this membrane, इस जगह पे। एंड एग्जाम्पल ये मैंने नीचे बनाया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इस पंप को इंसर्ट कर देंगे, ये सारे पंप किधर चले जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। ये जो पंप है ना हमारा, ये वाला एग्जाम्पल ऑफ दिस। Okay. This meeting is going to be